Hi guys, this is my first exposing video. I don't usually make these type of videos, but someone out there is pissing me too much. Specifically, here's an orca hunting vocalization, where they'll swim full speed towards a sound. It doesn't matter if there's 5 or 20 orcas, they go straight into the chaos for an interesting reason. Not to hunt, but make their way towards the prey and attempt to interfere. First, they'll place their bodies directly in the middle, between the prey and the orcas, using themselves as a shield to protect, taking on bites and attacks since their bodies have tons of blubber. Or above water, they might slap their tails down to splash and scare them away, or even use their flippers to push and shove them off the prey. But sometimes there's too many orcas to block, so they'll use other tactics instead, like flipping upside down and letting the prey sit on their stomach out of the water in safety, continuously defending the prey for multiple minutes and in rare cases hours until the orcas finally give up and swim away. It's theorized they do this because they have cross-species empathy. It's a misinterpreted instinct to defend their और तब ये past. पूरी स्पीड से साउंड का पीछा करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वहां पे 5 ऑर्गास है या 20 है, और फिर ये डायरेक्ट उस अटैक के बीच में घुस जाती है अपना मोटा और भारी शरीर लेके। पहले तो ये अपनी बॉडी डायरेक्ट प्रे और ऑर्गास के बीच में घुसेड़ देती है, खुद को ऐसा शील्ड बना के प्रे को बचाने के लिए। और अगर ये सब पानी के ऊपर हुआ तो ये डायरेक्ट अपनी टेल से जोर से स्प्लैश करके ऑर्गास को भगा देती है। और ये यहां तक कि अपने फ्लिपर्स का भी यूज करती है उनको भगाने के लिए। बट कई बार बहुत ज्यादा ऑर्गास होती है तो ये डिफरेंट टेक्निक्स यूज करती है, जैसे फ्लिपिंग अपसाइड डाउन, प्रे को डायरेक्ट अपने पेट पे बैठा लेती है खतरे से दूर पानी के बाहर। और ये ऐसा कई मिनट तक करती है और कुछ रेयर केसेस में तो कई घंटों तक करती है जब तक ऑर्गास चली ना जाए। और पता है ऐसा क्यों करती है? क्योंकि इनके अंदर क्रॉस स्पीशीज एम्पैथी होती है। Most useless animal? What's the reason? Well, first off, they can barely even swim. Unlike most fish, they have something called a clavus, which is basically just a stub instead of a tail fin, making it extremely hard to move around, often causing them to get stuck on the surface of the water and cooking to death from the sun, or aimlessly floating around, unable to turn. But they get weirder. They're entirely defenseless, where predators will attack and take bites of them, but they'll just keep swimming because their brains are the size of a walnut, and although they can feel pain, they can't really understand what's happening, simply doing nothing about it. Not only that, but their bodies are bony and rubbery, where predators will usually just bite and spit them out because of how bad they taste. Even fishermen don't bother catching them either, as the only thing that likes eating them is parasites. Some fish typically have over 40 different species of parasites living on their bodies at once. Being so infested, seagulls will land on them just to eat them off. On top of that, their mouths are permanently open due to their odd bone structure, unable to fully close, surviving by simply floating around, hoping something catches them and printing इसलिए इनके मुंह पर बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कई बार तो सीधे सरफेस पे फंस जाती है और सामने बिल्कुल को कहता है मौत की आवाज आती है। कहीं भी भटकती रहती है, मतलब कहीं भी। अभी और को ये एकदम डिफेंसलेस होती है, जिसकी वजह से प्रेडेटर ने खा लेते हैं और ये बस सुन करती रहती है। इनका ब्रेन से करोड़ के साइज के बराबर होता है, जिसकी वजह से इनको फील होता है समझ नहीं आता कि इनके साथ हो क्या रहा है, जिसकी वजह से कुछ नहीं होती है। इनकी बॉडी का जैसी होती है, जैसे प्रेडेटर ने खाते हैं वो तो थूक देते हैं क्योंकि मीट टेस्ट बहुत बड़ा होता है। जहां की फिशरमैन इनको पकड़ने का ट्राई नहीं करते, सिर्फ क्या बेइज्जती हो सकती है मछली के लिए। ये पैरासाइट्स खाती है और एक टाइम में इनकी बॉडी लगभग 40 से 50 पैरासाइट्स जिंदा रहते हैं। और देखो ये इतनी क्यों होती है कि सी के ऊपर बैठ के इनकी पैरासाइट्स खाती है। और भगवान ने जो इनके साथ किया है ना, क्योंकि इनका मुंह हमेशा खुला ही रहता है, ये भगवान को करती है कि कुछ इनके मुंह में घुस जाए और उनका खाना हो जाए। पता है इन चीजों के बाद भी ये 45 मिलियन Around the fish, it's taking turns lightly biting it. Then to traumatize the fish even more, they throw it out of the water and pass it around while playing with it. This constant harassment puts the other fish into panic mode, forcing it to activate its defense mechanism and release one of the deadliest poisons in the world, called tetrodotoxin, which is strong enough to kill around 30 adult humans. However, dolphins seem to know exactly how much of this poison they can tolerate, so they carefully pass it around, absorbing small amounts of the poison for around 30 minutes before finally letting the pufferfish swim away. Afterward, the dolphins enter a euphoric state, appearing calm and sometimes floating near the surface, seemingly fascinated by their own reflection. आपको क्या लगता है नशे का इंसान एक बार डॉल्फिन को देखो कैसे ये कोई जगह कर सकती है। आपको लगता है कि डॉल्फिन कितनी क्यूट है, आपको ये नहीं पता कि इनकी इतनी डॉल्फिन ने एक पावरफुल नेटवर्क ढूंढ लिया है द पफरफिश। इसको करना ज्यादा है कि बॉडी लिफ्ट से जाती है को डिपेंड करती है। और डॉल्फिन स्मार्ट एनर्जी की परफेक्ट क्या होगी हाई होने के लिए पहले डॉल्फिन पफरफिश को बहुत आराम करती है, आपको दरअसल स्ट्रेस हुआ है ये बेंच पफरफिश को बहुत नाइस पास करती है, एग्जैक्टली जैसे हम सीख सकते हैं। और डॉल्फिन को करने के बाद डॉल्फिन को डिपेंड कर जाती है, फिर सबसे फ्लोट करती है 20 30 मिनट इनकी आदत नशे की तरफ जाती है, ये कम दूर पता है पूरी